Sahil has done something in the room. The decor looks amazing. I'm shocked at how none of our friends have released that footage. We are not drunk. सब जगह पे फोटो शूट सब चल रहा है इधर. We've come to Marine Drive. बस तुम्हारा मजा आ गई? एकदम मस्त है. काही अब पका होता है. अरे Don't cry, it's fine. ठीक है, I tasted my own medicine. Yeah. And it was kadwa. Homemakers and people who work from home who handle the house also, they're very underrated. Hi guys, welcome back to another episode of More Mao, and today's video is going to be our anniversary vlog. Sahil got एकदम कि क्या बोलना है आज anniversary मुझे है. बोलना है कि नहीं बोलना है? आज निकल एनिवर्सरी है मुझे. Yeah, whatever. So we are in a hotel. Clearly, we just checked in. We haven't even seen our room properly. I will show you guys. Sahil has done something in the room, which was a surprise. But yeah, anyways. So we are in Lower Parel. Let me show you the skyline. Mumbai ka best part. But the theme of today's vlog is going to be things that we did as girlfriend boyfriend. So as I was saying that we are going to do everything that we used to do as a couple before we got married, to live our dating phase, because I think we have forgotten how to date each other. Correct. Because of all the responsibilities. Because I think after getting married, मेरे घर में थोड़ा फैमिली इमरजेंसी हो गया, डैड की हेल्थ, फिर साहिल की हेल्थ इमरजेंसी हो गई, फिर हम यूएस चले गए, फिर हमने घर शिफ्ट किया, फिर घर सजाने में ही 6 महीना चले गया. फिर मेरा काम आ गया. फिर साहिल 2 महीने से हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है. अभी भी साहिल 4 दिन में वापस निकलने वाला है उसके वेडिंग के लिए. आई जस्ट गॉटन सम टाइम विद दिस. But we've kept these 2 days entirely dedicated to us. Yeah. And we're going to do what we love. Yeah, so there are going to be very very low key normal things that a couple does जो हम करने वाले हैं. ऐसा कोई grand कुछ नहीं करने वाले, because we just want to relax and just relive our old days. Before we get started with our day, let me show you our room. We are in St. Regis and मुझे पता था साहिल कुछ ना कुछ तो हमेशा करता है ये रूम में. So let me just show you हमारा रूम. एंड साहिल ने सब डेकोर करवाया है उनसे बेचारों से. एंड देन देयर इज माय फेवरेट रेड वेलवेट केक एंड फ्लावर्स एंड बलून्स. I think even a letter. You wrote this for me? No, they wrote it for us. It's our anniversary, na? हाँ, correct. Let me show you the best thing. There is a bathtub, guys. But very chic. I love St. Regis for some reason. यहाँ पे हमारा मामा अर्थ का ये हुआ था इवेंट, द रेड कार्पेट फेमिना का, और आई थिंक हमने यही रूम लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैडी, मैं, आशी, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर. बट या वी आर वेरी हंग्री बिकॉज हमने कुछ नहीं खाया. अभी 3:30 बज चुका है, हमने लंच नहीं किया है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो हैव लंच. बट दिस गाय इज फिगरिंग आउट बाहर का व्यू. फिगर्ड आउट. ओशन व्यू लिया, अभी देखना पड़ेगा ना ओशन व्यू है कि नहीं. They have even upgraded our room because it's our anniversary. So let's see the view. किधर दिख रहा है ओशन? रेस कोर्स है ये. द पीपल वर वेरी काइंड एंड आई थिंक वी हैड बुक्ड अ रेस कोर्स रूम. इफ आई एम No, I had booked an ocean room only. Ocean view only. Upgrade पहले से किया था, and I put in a request कि can I get an upgrade, further upgrade, and then they gave it to us. And Can I get an upgrade for an upgrade? further upgrade? I said. Further upgrade. Okay. Yes. So we can see the sea and we You can see the race ceiling, course. race course, everything. Oh, those are my favorite buildings. The Twin Tower wala. Trump Towers. Lodha Trump ka. Tower. Yeah. Is that Trump Tower? Yeah. That thing. हाँ. जो triangles है. Correct. वही होना चाहिए. उसके नहीं, right में वो Trump नहीं Tower. है. हाँ, उसके राइट में. फिलहाल QI की धज्जियां उड़ चुकी है मुंबई में भी, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे सी, बट है वहाँ पे, बिलीव मी. कोस्टल रोड दिख रहा है पूरा. या तूने महालक्ष्मी रेस कोर्स पे शादी की है ना? Good question. You are a good question. Yes. मतलब कराई है. कराई है. मैंने केसरबाग में ही शादी की है. बाल बाल बच गया रे देवा. Yes, a year ago. Anyways, I'm gonna go have food because I'm famished. A little later. The decor looks amazing. We are in Palladium, guys. We are going to food. Yes. Have lunch. मजा आवશે शॉपिंग में. Bershka also has Uniqlo here. अपन को पूरा shopping set है भाई. मजा आ गया. चल. खाना खा के शॉपिंग. So Sahil and I love exploring food. So we are very I am very safe with my choices. But we love exploring food, and this is what we used to do when we were dating also. We used to go to certain cafes which were our favorite and eat that certain item. तो हमारा फूड ऐसा है अभी बन चुका है कि एक स्पेसिफिक सुशी दैट वी ईट व्हिच इज लाइक द ब्लू राइस माकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पाइसी हाफनेरो ऐसा कुछ तो नाम है. blue rice maki. Yeah, so that we have ordered that, and we have tried new things today. Yeah. Because again, we wanted to try new things which we used to do before. So that's that. We're waiting for our food, and We're very hungry.
नो बेसिकली अभी शाम हो चुकी है 14 जब हमारी हल्दी लग रही थी, हल्दी फंक्शन चल रहा था. So we were, so we were checking all our haldi footage. I just posted some stories also on my Insta, like a throwback situation. So what was your favorite part in haldi? Lots and lots, but I feel the theme that we had curated based on You did that. no, but everyone, सबका था उसमें contribution, but the apps that resonate with us so much, and वो apps के हमने stalls रखे थे. And That was सारे crazy. guests ने Yeah. सब एंजॉय किए, लाइक दे एंजॉयड दैट ईच एंड एवरी ऐप. Yeah. हमें जाके वो सब चेक करना है. एक्चुअली सबने व्हाट्सएप मैसेजेस लिखे थे. सो फोन ऐप में पीपल वर रिकॉर्डिंग वॉइस Audio मैसेजेस messages, फॉर yeah. अस. देन व्हाट्सएप में दे वर राइटिंग बिकॉज़ व्हाट्सएप इज चैटिंग, राइट. फिर स्नैपचैट में लोगों ने फोटोज खींचे. Props के साथ. Correct. Instagram पे reels बनाए. या And YouTube YouTube में पे vlog ब्लॉग किया. किया हमारे लिए. सो लाइक एवरीथिंग was like for guests and they Yeah. actually enjoyed it. Even in the AstroTalk app हमने तोता वाला रखा था. Yeah. So astrologer plus तोता वाला तो वो वहाँ पे हो गया. Correct. We'd also get PUBG stall जिसमें people did balloon shooting. So this was a very elaborate thing that we did and बहुत मजा आया. And obviously the हल्दी function जिसपे हल्दी लगी, मेरे कपड़े फटे. तू गिरा. हाँ मैं गिरा, मैं तो slip हुआ हूँ. I think I'm shocked at how none of our friends have released that footage. Like everybody was Yeah. with their camera and Sahil just slip हुआ है. Should I add सबके that? पास है. Yeah, you can. Okay, I'll add it right now. Yeah, तो मैं खतरनाक slip हुआ And था. मैं भी गिरी by the way. Yeah. वो भी मैं add करूँगी. So we both fell in the haldi function. So yeah. Our drinks are here. Cheers. Very refreshing. So we're here shopping and someone has found a lavender jacket. It's reversible. It's reversible. And she got so excited कि reversible है plus lavender है, matchने लग गई. A few hours later. यहाँ पे strawberry with chocolate prepare हो रहा है और यहाँ पे वो एकदम खुश हो रहे हैं. We have finished our shopping spree. Yeah. There are 4 bags, big bags. And now we're taking a short refreshment break. And she's very happy. A little longer than a few minutes later. हाय गाइस. सो हमारा शॉपिंग हो चुका है, हमारा मॉल में भटकना हो चुका है एंड खाना हो चुका है दोपहर का. सो नाउ दैट वी हैव कम बैक इन द रूम, अभी रात हो चुकी है. सो हम क्या करते हैं कि हम खाना मंगाते हैं वापस और खाते हैं. ये हमारा हॉबी है एज अ कपल. वी गो टू होटल रूम्स, ईट फूड. बहुत मजा आता है. Watch OTT. क्या वॉच इतना दूर क्यों खड़ा है? Watch something on OTT while eating. नॉट ऑलवेज OTT. हाँ कुछ भी हम देखते हैं. Movies, fashion shows, Victoria's Secret. बाकी है ना देखना अभी. Yeah, I make Sahil watch. Yeah. Sahil watch. I Sahil watch. तुमसे ना हो पाएगा. I make Sahil watch the Victoria's Secret this because I am like crazy for the shows. तो ये साल का बचा है हम लोग का. But हमारा खाना आ चुका है, but कटलरी नहीं है. So the room service is gonna get us cutlery. Till then we are gonna do. ये हमारा एक other hobby है कि हम cringe dance करते हैं. चलो, let's. Ready? What is it? Husky dance. No, it's नहीं. गलत सभी बताती है. बाप रे ऐसा है ही नहीं. पैर ऐसा पीछे है एक. 1 2 3 नहीं, राइट पैर आगे ना. और फिर नहीं. करेक्ट. नो दिस इज ऐसा करना अरे है. भाई ऐसा है ऐसा. यहाँ पे करना है. ओके ठीक है. 1 2 3 गो. मजा आया. ऐसा तो सही रास्ता. ऐसा ही करती आई है. नीड टू वेयर माई हील्स टू लुक नाइस. वेट. लेफ्ट लेग आगे, हाथ नीचे. 1 2 3 किक. Many hours later. I need like a long runway, you know. Okay. Best female. Woo! 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 ऐसे ही चिल्लाता था मैं. समझा? During your fashion shows. अरे बाप रे. We are not drunk. This is how we are in real life. Anyways, भाई भूख लग रही है. यार भूख लग रही है यार. वो भी यार. शेडा जॉन सीना रिटायर हो गया. मैं क्या बोल रही
रहे हो? हाँ तो आ रहा है कटलरी. मौत को छू के टक से वापस आ सकता. ये काम करेले चिकन लॉलीपॉप खा ले. देख चिकन लॉलीपॉप देता है इसको. बबी क्या? I just figured out कि हम क्या देख सकते हैं. What? Stranger Things. Oh yes. Yes. मैं कब से रुकी हूँ तेरे लिए. Yes. Let's do it. फूड इज रेडी एंड हम अभी पहले रिकैप देखेंगे. वाह, मूड सेट कर दिया गया है. गुड जॉब हस्बैंड. लेट्स डू दिस. The next morning. We have checked out from our room. Yes. And we are gonna do the next best thing that we love to do, which is watch a movie. Yeah. Dhurandhar is recently released and we have been wanting to watch that for a long time. कल हमने Stranger Things देखा, एक एपिसोड ही देखा. We have to watch it. But yeah, अभी हम जा रहे हैं PVR Palladium जो बाजू में ही है. So we are gonna load all the bags in our car and then go. Yeah. Give the car back to the valet and Yeah. then just it's walking distance. Distance भी नहीं, it's in the same building. building. So वहाँ पे ही जाने वाले हम लोग to watch a movie. Let's go. The movie is over and we just changed into our outfits, but मेरी zip बंद नहीं है तो मैं जैकेट पहन के बाहर आई हूँ. Have to figure गाड़ी में out. बंद कर देंगे. Yeah, या फिर भक्ति दी को बोल दूंगी वैसे they are way. Even Sahil's parents are on the way. Yeah. And we are taking our parents to a very fancy dinner. I'm gonna reveal the location in a bit. Hi guys. So we have left. We are in the car right now and थोड़ा मेकअप शेकअप चालू है. What is ऐसा the लग ही नहीं रहा ETA? कि मेरी एनिवर्सरी. लुक एट मी, आई एम लुकिंग सो पेल. You're looking so pretty. ETA का आया है. इट इज 26 मिनट्स. सब लोग वही टाइम पे पहुंचेंगे एंड वी विल शो यू द लोकेशन वंस वी रीच. Yes. इट्स ऑन. गिफ्ट्स कैसे लेने का compliments. कॉम्प्लीमेंट कोई देता है तो मुझे Take है because भक्ति दीदी मैंने बोला तेरे को चालू है फिर भी बंद कर दिया उसने. कुछ नहीं टेक है गाइस. थैंक्स. सब जगह पे वीडियो शूटिंग, फोटो शूट सब चल रहा है. इधर मम्मी लोग का फोटो शूट खत्म नहीं हो रहा है. साहिल ये क्या हो रहा है. न्यू पीपल हैव जॉइंड इन. शो योर नेल्स. God knows. How is it allowed in your school? I have no idea. मेरा आ गया ईयरफोन्स आ गया. मेरा क्या है? वायर्ड ईयरफोन्स. ये एयरपॉड्स वाला करो ना. Is it a magnet? Thanks guys. It's a stand. Sahil. ये कम यूज कर. वाह. What nonsense. आता तुम्ही Is it a इलेक्शन stand? अभी तुम्ही इलेक्शन वगैरे होऊ शकता. Yes, yes. मन्नू भाई. मंगलसूत्र please. Gold. It's a gold coin. Thank you so much. Thank you. पैसा. दोनों का अलग अलग है. अरे अलग 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 अलग. साथ में जाएगा एक ही. ले ले. घर के खर्चे निकल गए. बोल शवी का तूने. मैंने खुद को बनाया है. दीपक साहिल थैंक यू. मला नाही. होगा ना मिळू. Thank you. थैंक यू सो मच. दिस इज फ्रॉम हर पिगी बैंक. Yes. दैट्स सो क्यूट यार. इट्स वेरी क्यूट.
Thank you so much, guys. Thank you. ठीक और आने दो और आने किसको देना है? उधर ही दे Happy anniversary to wow, so magic. त्याला चांगलं एक्सप्रेशन दे खाताना. Wow, सब एक हाथ ले Cake eating ceremony, never ending. काके केक काढले हॅपी अॅनिव्हर्सरी टू अंडा साहिल वाटे वाजते हॅपी अॅनिव्हर्सरी घेतला मी ताईचा केक. A little later. We've come to Marine Drive. आई फर्स्ट टाइम आलेस ना इकडे? Oh, must. I'm so scared. You come here, right? Yeah, I was in GOC na. Oh yeah. Baba, you? मी आलो पण रात्रीचं नाही. I'd come in the afternoon. इकडे नेहमी यायचो ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटरला वगैरे Baba. तिच्या कामासाठी. Okay. कप परेड क्या पूछ रहे थे कि ये लोग आए हैं कि नहीं? मॉम तो नहीं आई है. बहुत कम है कुछ भी इधर ही पड़ा रहता था. एयर इंडिया बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है इधर टाटा हाँ, correct. TCS. मॉम भी बहुत कम आई दीदी तू भी चल नहीं के आई है आती नहीं है वो ना? RBI वाले ऐसे बोलने लगे तो कैसे चलेगा? Going back home. बस मला मजा आली. एकदम मस्त. काही त्या पकवतायत. चेहरा वाटत नाही. तिला भरपूर मजा आली. वाटत नाहीये. Did you have fun? Great. Very much. Enjoyed a lot. What was the best part? Best part was the Taj lobby. Yes. Photo shoot. Sal के parents are also coming with us. बाकी लोग have gone in Ranjit's car. So yeah, that's about it. We will see you tomorrow. So that was our wedding anniversary celebration, and we wanted to conclude this vlog by just like sitting down and reliving the entire year and recapping it kind of. So let's start. Let's start from January. You wanna Yes, first Jan की पूजा जो इनके घर पे होती है and I think it's going on since years, right? So that's the first time that we as a married couple sat in that सत्यनारायण की पूजा. On mid Jan was Makar Sankranti. Yeah. तो वो हमने किया. फिर साहिल की मॉम आई थी घर पे and like a lot of it's a ladies situation, ladies Yeah. thing. तो it was like a new experience for me. मैं जब से छोटी हूँ तब से मॉम को हेल्प करती थी हल्दी कुमकुम के लिए. तो I used to help with like samosas and आंटियों को फ्लावर देना, गिफ्ट्स देना, and this time it was happening for me. So it was a like different आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फॉर मी. ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरा चाइल्डहुड घर में मैं ऐसे एज अ चाइल्ड देख रही हूँ, ये सब हो रहा है मेरे साथ. सो या आई थिंक हल्दी कुमकुम के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज ऑन 15th of Jan, because we were going to celebrate our 1 month anniversary, but तभी my dad got a stroke. And it was a very panicky situation for all of us. I remember Sahil was somewhere in his wedding. Mumbai में ही था, but yeah, so he rushed. We took him to the hospital and it was really bad. But yeah, Jan में वो एक significant चीज हुई थी हमारे साथ. And next was obviously 26th of January, the Republic Day, one of the very important days for our country, and also my wife's birthday, जिसके लिए मैं present नहीं था because I had a wedding. So yeah, I wanted to be there, but again, since I had missed a lot of days because of my wedding, so I had to travel for her birthday. And then I came the next day. I came on 27th. So I'm sorry. Let's move on to the next month. So then in the month of February, I think on 3rd of February, we celebrated 600K on Manasi Mao channel. बस मॉम डैड आ गए थे, बलून लेके केक काटा and that's it. And then I think only highlight was we went to Mussoorie. Yeah, on after 25th, that. yes. 25th of Feb, because साहिल का wedding season finally खत्म हो चुका था. Dreadful 4 months were over and we were like चलो, मतलब literally उसका 24 को खत्म हुआ और हम 25 को निकल गए to Mussoorie. Do you want to go? Yeah, and then next March, highlight. obviously March. Once we flew to Mussoorie,
25th. We came back, I think, in First 4 5 March. days. 1st March. And then 2nd March, my herpes ocular thing was detected. And it was a very painful month for both of us, to be honest. Yeah, I think we can't attach those pictures because they are Yeah. very gruesome. I don't wish this upon anyone in the entire world. It was so painful. I haven't seen Sahil being so weak, and it was a very difficult period for all of us. Is because मतलब इसके parents, मेरे parents, we all were taking care of him day in day out, and I remember Sahil being in so much pain. He used to scream with pain, like इतना बड़ा इंसान है ये, and then I have seen him puke. I used to hold him while he used to puke. उसको पता ही नहीं था उसके I think 8 दिन कैसे, जो main 8 दिन थे, he doesn't remember anything. He asked for the pictures also because I used to click pictures to show it to my dermat every day. I used to give him update कि कहाँ that, what is it called, boils, what is it called? नहीं, herpes के हाँ, जो herpes भी के boils boils, होते yeah, हैं, they track your nerves. So it started from his eye, from here. He still has that mark, and then it just started and started going in his head. So his head used to throb. It was This was entirely swollen, and with I think boils and dono stuff. doctors ne, like even the eye doctor and the dermat had told me that this is one of the most painful thing a man has can to go. experience. So that was it. But I know she was breaking inside because obviously 2 months into the wedding, 3 months into the wedding, and this has happened. Yeah. But my wife took care of me like no one else did, and obviously her parents, my parents, everyone It was was a there. team. It was like everyone was on toes, and special thanks to you. We also shifted to your parents' house. Yeah, because that was the I perfect got thing better. to do. Mom ने भी छुट्टी ले ली, तो we had his extra mom took a hands on छुट्टी, board. yeah. कि she was there, mom dad were there, Yeah. Maids were there and all of that. Correct. So we had extra help. And मेरा पूरा content सब बंद हो चुका था. I had already announced कि साहिल की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने brands को भी बोल दिया था वो सब. Anyways, that was a bad month. Let's move on. But उसमें मेरा birthday भी चला गया. 9th Yes, साहिल का बर्थडे. वो एक पिक्चर में आई थिंक अटैच कर सकती हूँ विद साहिल के फेस पे थोड़ा हाथ डाल के. बेचारे ने शीरा का केक कट किया. रात को 10 बजे ही हमने केक कट करके उसको सुला दिया था. सारे दोस्तों को मैंने बोल दिया था कुछ मत कर. And for this birthday, I had planned so much because Sahil and I are not big on birthdays. So this time we decided कि नहीं, शादी के पहले वाला बर्थडे हम अच्छे से करेंगे. इसने तो मेरा कुछ किया नहीं because ये अवेलेबल ही नहीं था. So I was like, इसके लिए मैं करूंगी बट रिगार्डलेस. और मैंने इतना कुछ प्लान किया था. मैंने ग्रुप बना दिए थे दोस्तों के. फुटबॉल का टर्फ बुक कर दिया था. सब कुछ हो गया था. वी वर गोना कुक फॉर आवर पेरेंट. डोंट क्राई, इट्स फाइन. रेड तो नहीं है, मैं ऐसे मैं सैड फील कर रहा हूँ. So everything was planned but वो नहीं हो पाया. So March is over. The worst part of our life was over. April it just came back to normalcy. I feel things. I rejoined my work. थोड़ा I used to go 2 days a week, 3 days a week. So वो एक मेरा था aspect. Correct. Second week of April we went to Sahil's natives, which was like a pending trip. So शादी के बाद you generally go to each other's natives, right? So March में we were supposed to go to my natives because Maharashtrians में Shimga बोलते हैं, which is like a big holy festival that we celebrate. उसके लिए we were supposed to go but we could not because of his herpes. Then April में we went to his गाँव because we wanted to visit the Kul Devi. मेरे दोनों गाँव गए थे. My mom side also, dad side also. So obviously वहाँ के relatives को मिलना, मासीज इन लोग को मिलना. And main तो कुल देवी की भी जो we have to take the blessings and all of that. So वो शादी के बाद हुआ ही नहीं था because I got busy. So this was the trip. We'll attach the clips and it was entire family there. सब लोग को बहुत मजा आया. Sequence वगैरह हमने खेला. फिर हम गोला खाने गए. And it was my first time visiting Gujarat, by the way. So it was fun. 20th April was again a like big day for me because it was my first ever cricket match in a stadium. I was watching Dhoni play. भले वो आउट हो गए बट क्या फर्क पड़ता है मतलब. तभी हमारा मस्त ट्रैवल था. I was always a Mumbai Indians. I'm still always a Mumbai Indians fan and she was CSK because of Dhoni. Perfect example of opposites attract, guys. Then is the moving out thing. Yes. Last 25th of April ke around we moved out from my last studio and came to this house. Oh my god, I have had so many memories. Evie is kind of born there, so we have had so many good memories with our friends, our families. Pura shadi ka prep was done over there, but it was time to move on and start something new together. So we decided to move out from that place and come here. And I think my parents were in US already, so your parents were here throughout helping us move. Dad was here, mom was here, so we were just doing the shifting. So April ka end and May ka beginning thoda bahut hamara usme sab गया था. Then May was again, we moved into the house, so we were enjoying the sunsets, which are very beautiful. Bro, the sunsets were crazy. मतलब ऐसा so basically my previous, मैं तो जहाँ पैदा हुई हूँ मैं एकदम नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी. सारे झाड़ होते थे. मैं भी एकदम lower floor. She was also on the like to a point where we can just climb stairs and go. ऐसा मतलब लिफ्ट की भी जरूरत नहीं. हम इतना नीचे रहते थे. हमें कभी सनसेट ये सब देखना नहीं मिला था. फिर जब मैं सेकंड या थर्ड स्टूडियो में जब शिफ्ट हुई थी तब थोड़ा बहुत दिखता था बट ग्रिल्स था आगे. You guys must be knowing. तो ऐसा प्रॉपर विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, नो
बिल्डिंग सामने, ओनली ग्रीनरी एंड सनसेट, ऐसा कभी व्यू देखा ही नहीं था. पैनोरामिक व्यू कभी नहीं मिलता था. और ये घर में आके जो हमें व्यूज मिल रहे हैं इतना टॉप फ्लोर पे आके देखने के लिए. आई थिंक मे वाज अ टाइम व्हेन मुंबई हैड गॉन क्रेजी विद द सनसेट्स, लाइक पीपल यूज्ड टू गो रन टू मरीन ड्राइव टू क्लिक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. देन आई थिंक मिड मे से वी स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ईवीज डॉक्यूमेंटेशन. एक्चुअली मेरा अप्रैल से चालू हो ही गया था, बट मे में बिकॉज वी हैड टू फ्लाई इन द मे का मंथ ओनली, तो बिफोर यू फ्लाई देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ता है जो नवी मुंबई में है. आई एम गोना सिट डाउन एंड मेक अ वीडियो. आई नो आई हैव बीन सेइंग दैट अ लॉट, बट आई जस्ट डोंट नो इफ यू गाइस वुड लाइक टू वॉच इट, बिकॉज वो मेरा चैनल है नहीं. मतलब मानसी माओ या मोर माओ दोनों पे भी मेरा जॉनरा पेट रिलेटेड कुछ है नहीं, बट आई शुड मेक इट बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो हाउ एग्जैक्टली आई ट्रैवल, बिकॉज It's nobody like an informative video. Like when we also searched, you didn't get any proper content है ही नहीं. where you know कि next steps क्या इंडिया है. से यूएस का So, कंटेंट नहीं है. Even if you make it regardless of your channel genre, I think people will watch it. Watch And it'll it. help. Watch तो छोड़ो. It'll Yeah. help a lot of people जिनको ये करना है. Correct. So yeah, we were very busy with that because we had like assignments back to back and we were going and just doing उसको the train कर रहे paperwork. थे. 25th May we left for US. Yeah, we left for US. Correct. So It that was our honeymoon slash family trip. Technically, genuinely, I'll tell you, मुझे US नहीं जाना था. I did because I had already done US का trip before we getting but मुझे married. जाना था. जाना तो था बिकॉज मैं अपनी फैमिली वहां पे रहती थी. Yeah. बहन रहती है, मेरी बहन रहती है, तो बट एज अ हनीमून प्लेस Correct. हमें नहीं करना था. हमको यूरोप ही जाना था. बट द सिचुएशन टर्न आउट लाइक दैट कि बाबा मतलब मेरी फैमिली निकल चुकी थी पूरी. मतलब स्नेहल ताई, रंजीत, मॉम, डैड सब लोग दीदी को मिलने के लिए इन अप्रैल में ओनली, अप्रैल के टाइम पे ओनली. एंड टर्न्स आउट हिज सिस्टर वाज आल्सो गेटिंग ग्रेजुएटेड थी. उसका कॉन्वोकेशन था व्हिच इज अ वेरी बिग डील. तो उसके पेरेंट्स भी जाने ही वाले थे, साहिल भी, हम भी जाने ही वाले थे. सो वी वर लाइक सभी ऐसा वो एक अवसर बन चुका था कि सब लोग पूरी फैमिली झाड़ के अलॉन्ग विथ माय डॉग सब लोग यूएस में होने वाले थे. सो वी वर लाइक चल ठीक है, वी एनीवे अदरवाइज कांट अफोर्ड अ ट्रिप. मतलब यूएस भी करो और फिर यूरोप जाओ, वो तो नहीं हो सकता. सो देन वी डिसाइडेड कि यूएस में कर लेते हैं. हाँ, जून की ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज वो सारे व्लॉग्स में आपने देख लिया है क्या क्या किया है. बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया था. हम आई थिंक 25 दिन के लिए गए थे, तो हमने 7 ऐसा कर दिया था. 7 days विद माय पेरेंट्स, 7 days फॉर अस, जस्ट अस, एंड 7 days विद साहिल्स पेरेंट्स. तो मेरे मॉम डैड के साथ हम लोग जर्सी में या न्यूयॉर्क में ही घूम रहे थे. हम कहीं गए नहीं. विद हिज पेरेंट्स वी वेंट टू नायग्रा फॉल्स. वी आल्सो वेंट टू फॉर द कॉन्वोकेशन. ऑफ कोर्स वी वेंट. आई विल अटैच द पिक्चर्स बिकॉज मैंने उसका ज्यादा इतना व्लॉग या दिखाया नहीं आपको, तो आई विल जस्ट अटैच दोस पिक्चर्स. एंड फिर हम हनीमून के लिए एलए गए थे. उसका भी व्लॉग ऑलरेडी आप देख सकते हो जाके. सो या जून का ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं. मूविंग ऑन टू जुलाई. सो 15th of July it was like a panel discussion for YouTube with brands, how मतलब कैसे partnerships work करती है. So 3 YouTubers were invited. More Mau, so like both of us were invited. फिर जानवी थी और हेली थी. फिर है 31st July, which was Sahil's first award. Yeah, it was the first award that Shuptati had gotten. We had done a drone show in the month of February in Jaipur. It's on Instagram. मतलब reel भी पूरा viral हुआ था. So it was our first ever drone show and the first ever drone show done at that property also. Yeah. So we got the first It was award. crazy. मतलब अगर आप उसका BTS देखोगे तो सारे ड्रोन से साथ में उड़ते हैं and then they are doing the formations and they are actually depicting the story of the couple. So it was such a thoughtful thing to do and very unique thing to do. So they got awarded for that. So it was like a very significant thing for us. फिर आता है August. तो basically started our health journey kind of. तभी Ask Natural के साथ we started doing yogas together, which was like the fun part. I feel we can go back to that again. Yeah, we will resume. Yeah, I love doing yoga first of all, and when it's like with him, so it's all the more fun. So that kind of health journey started for us. Then I think 8th August is Papa's birthday, so we went and celebrated that, and then immediately next दिन पे all the fuis had also come for Raksha Bandhan. And mid August was मेरे घर पे all the cousins, we did like a potluck इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. तो सब अपने अपने घर से एक डिश लेके आए थे. लाइक अ भरता ऑफ ऑल द cuisines possible. Moving on to September. So 1st September we left for Ganpati at her native place. That's my favorite festival. This is the first time that I went to her native. Car journey इतना beautiful. हम लोग ने वड़ा पाव खाया on the way. Yeah. And हम लोग ने 3 गाड़ियाँ एक साथ निकाली थी. Like our car, her both my cousins. हाँ, वो vlog आपने both her देखा होगा cousins गणपति तो vlog. बहुत Please मजा do आया. watch. हम लोग कार से खेल के जा रहे थे. And then वहाँ पे full एकदम पलटन. एवरीवन वाज हैविंग फन, स्लीपिंग टुगेदर, प्लेइंग गेम्स. वहाँ पे बॉम्बे में सेलिब्रेशन और वहाँ का सेलिब्रेशन इज वेरी डिफरेंट. Yeah, गणपति celebration. Yes. वहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस था. एंड दैट ऑब्वियसली यू गाइस हैव सीन इन द व्लॉग्स. Yeah. फिर end of the month में I went to Delhi for a shoot, urgent Yeah. shoot. I don't think I can talk about it yet, but वो वही shoot है जिसमें मैडी थी, मैं थी, साहिल भी आया था मेरे साथ, and we did something जिसके बारे में मैं भी soon I will talk about it. Just थोड़े time में I will talk about it, hopefully. But yeah, that was like a big opportunity for me. So we did that, and I loved that Sahil could accompany me and manage his talent, which is me.
एकदम टैलेंट है माझी. Next was And then 24th September we booked our car. oh yeah, Yes. I forgot only about it. Yes, we booked our Mercedes. Woo! Yeah, we booked our Mercedes. 18th October धनतेरस था तो Mercedes की डिलीवरी भी तभी आई. And हमने I think दिवाली पार्टी भी उसी दिन रखी As a थी. married couple, Yeah, for as a our married friends. couple. हमने लास्ट ईयर भी रखी थी एक at our old house and Yeah. ये साल भी हमने रखी. तो all of our friends had come, we did a party. उनको भी हमने कार दिखाई. So yeah, Yeah. मजा आया. Fair. One more significant thing happened in October was we completed 7 years of our relationship on 22nd. So then we went to this resort called Anchavios, which is Palghar side pe. It's one of our favorite resorts. Now we go there to chill. Yeah. I think she has been there thrice. Thrice. Now. I've been there twice. Yeah, मैं एक बार ईवी को भी लेके गई थी. I think you guys have seen that vlog. मैं and mom भी थी और ईवी भी थी. Yeah. So it's very nice, like resort, Like a even pet getaway. friendly. Yeah. Then है Thailand trip. For me, it was my first ever fully paid work trip. Paid as in Yeah. उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया था to talk about them. उन्होंने Everything मेरा was खर्चा covered. सब Yeah. cover कर लिया था, like Yeah. tickets and everything. And मतलब उसके पहले से I think Mama Earth के time पे they used to fly us to Delhi Yeah. and they used to do that. But 7 days long international first brand trip मेरा first time हुआ था. So Yeah. it was again like a Proud of special you. thing for me. But the best thing was not me going for the trip. The best thing was that I am gonna leave you alone and you get to taste your own medicine because he Fine. leaves me like 4 months in a year back to back. He's hardly home. We literally do like long distance relationship, guys. And जब मैं उसको 7 दिन छोड़ के गई थी तो ये इतना मायूस हो चुका था कि और तब उसकी कोई शादी नहीं थी, उसका कोई मीटिंग्स हाँ, I नहीं was था, at वो पूरा home टाइम घर पे only. था. तो ठीक है, I tasted my own medicine Yeah. and it was कड़वा. But क्या कर सकते हैं. Okay, moving on to the second last month of Yes. this year, which was November, and उसमें था साहिल का wedding season. And I think 14th of November was our first wedding and ever since I've been traveling. Yeah, Sahil just comes again, changes his clothes, bag अभी यहाँ मैं से वहाँ परसों फिर करता से है. जाने वाला हूँ. या फिर वो कपड़े मुझे देता है कि सुन ये ऐसा ऐसा करना है, फिर इस्त्री वाले को बुलाता है, फिर वही कपड़े वो इस्त्री करके लेके जाता है. It's a routine now. We are set in that routine now. But that अभी वही है मतलब. और नवंबर में और कुछ नहीं था. भाई दूज celebration था. हाँ. Where Sahil's Fuis came and they saw the house for the first time. Yeah. And we went saw for the car, we dinner. saw the house, we went for dinner, we had good Yeah. desserts and all of that. Oh, the desserts. मतलब everybody was like enjoying. I love that about them is that कि वो लोग बहुत चिल है. लाइक मेरे घर पे ऐसे सब टाइम है, ठीक है. इनके घर पे ना उल्टा है, मतलब सब टाइम हाँ चलेगा कोई बात नहीं, ये wait वेटिंग है करना 20 पड़ेगा, मिनट, कर लेंगे. हम बाहर खड़े रह के 20 मिनट. अगर ये मेरे पापा को पता चलता कि बाहर 20 मिनट का वेटिंग है, ही इज लाइक घरी चल, काही गरज नाही आहे, मला नको काही नाही खायचंय. सो लाइक I loved that. Another highlight for me was Didi came. Didi came in like mid-November, if I'm not Yeah. wrong, and that was the time when we shifted our house. That was not a good thing, but it was a Yeah. significant thing. It was very emotional as well. I think we have vlogged I don't know, like everything. नहीं समझ में आता मुझे कैसे मैं वो उसको एड्रेस एड्रेस करूँ करो. अभी भी. नो इतने साल का घर, इसके तो बचपन का 28 साल से, इनके Yeah. मॉम डैड के लिए 40 years 46. से. So 46 आई बाबा years. I've lived there for 46 years. Yeah. So that's crazy, leaving all of that behind. So that was again a significant thing. And then comes December, जो अभी चल रहा है महीना अभी भी. So I think उसमें एक ही significant चीज है, which is us. Yeah. Anniversary. So that was the recap of this year. But if I have to ask you that तूने क्या सीखा ये साल में as a married man, what would you say? मैंने ये सीखा कि संदर्भ स्पष्टीकरण, संदर्भासहित हाँ, स्पष्टीकरण. ये सीखा नहीं है. दिस इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दैट मैरिज इज definitely love and everything, but marriage is also work. Like we need to understand each other. We need to understand that ये कैसे रहा है. I need to understand ये कैसे रही है, कैसे पली बड़ी है. We have to adapt to each other, and that has been, to be honest, a lovely process. We've had our ups and downs. Yeah, absolutely. Every couple has. To adapt it, but that's our strength, that we are able to do that, and we are able to do that happily. Another observation that I saw was कि she's not a homemaker. She works obviously, but she works from home, right? So I go to office. I have my daily routine कि मैं 11 बजे या 12 बजे निकल जाऊंगा. I come back at 5, 6, 7, 8 whenever, it depends on the meeting. But she is the one who's handling the house, to be honest. Whenever the maid comes, like अभी she mentioned कि इस्त्री वाला आता है तो इस्त्री वाले को देना, अभी AC वाला आया तो AC वाला को ठीक कराने देना, वो कर रहा है काम, but इसका mental load तो वहाँ पे जा रहा है ना. So I feel homemakers and people who work from home who handle the house also, they're very underrated. And
I've read in the comments कि people call me a green flag. Yes, मैं हूँ ही green flag Yeah, अच्छे से. but my audience is also all girls, na, so they also want That's somebody true. like you. No, So that's true. That agree. मैं वही बोल रहा हूँ. मैं तो हूँ green flag, no doubt. But I'm telling you, she's also a green flag. That she has done these many things for the house and it keeps the house running. To be honest, अभी अगर हम दोनों बाहर चले जाते तो फिर permanent घर house है. चीटियों से भरा हुआ हाँ, चीटियों से भरा ना मिलता या हम रात को एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये बाकी है. But now because she's taking off that mental load, I'm able to do my work. I'm able to do the outside load. जो भी काम है वो मैं कर सकता हूँ. So that is why I think homemakers and the people who work from home and especially my wife is very underrated. They need to be given credit about and I'm very proud of you that you do तुझे that क्या for me. चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए. मस्का क्यों मार रहा है फिर? मैं ऐसा ही हूँ भाई, ग्रीन फ्लैग हूँ मैं, गौरव खन्ना. GK for the win. मुझे तो कुछ सीख मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या बोलना है ऑनेस्टली. जहाँ से मैं आती हूँ, जैसे मेरे घर में, साहिल के घर में एक ब्यूटीफुल थिंग हाउ हिज मॉम हैज रेज्ड बोथ द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर डिफरेंट जेंडर्स. एक लड़का एक लड़की है एंड शी इज नेवर डन एनी भेदभाव. सो लाइक व्हाटएवर मिताली वुड डू, साहिल विल डू द ऑल द चोर्स जो मिताली भी करती है, सब कुछ मतलब सेम. सो मेरे घर में क्या है कि माय पेरेंट्स हमको एकदम ऐसा फूल जैसा रखा हुआ है. लाइक वी बेयरली डिड एनी घर का चोर्स. ऑफ कोर्स जब मॉम डैड फेल सिक और समथिंग, ऐसे नहीं कि हमने कभी we didn't give a f about our parents. I'm just saying कि हमको कभी नौबत नहीं आई कि because your parents used to work और मेरी मॉम तो घर पे होती थी, तो my mom is like you don't come in the kitchen, it's fine, we'll manage. तो हमने कभी घर के काम इतने से किए नहीं थे, right? And I take that as a privilege कि हमको नहीं करना पड़ा था. But यहाँ आके like after getting married, since we live alone and we don't have like a 24/7 maid or any house help, I didn't know that I could do so much. Like I also understood कि marriage teaches you your new thresholds. Yeah. And that goes for everything, not just like physical work, mentally also. Your forgiveness power changes. Like I would hold things against people. Now I don't. I've mellowed down. Like my anger has gone down. It also comes with maturity or age also. But I feel the first year of marriage teaches you a lot. And it's the most important year and a stepping stone for any marriage. जो भी boundaries आपको set करनी है किसी के भी साथ, एक दूसरे के साथ, that has to be set this time in this period. Yeah. And whatever it is, you can't push it under the rug. It has to be addressed. You have to have those difficult conversations. And I feel that I have come to that point where I can sit and talk rather than acting out. Right. Which I feel That you have improved a lot. yeah, I have improved in that. मुझे लगता है marriage has taught me that patience, forgiveness, pushing your thresholds. Yeah. And loving each other more. वो तो inevitable. Every time. Every day. Every second. Every hour. चला था પાટ જેવાય દુખતો હોય, मला નૂડલ્સ ખાઈ છે. જમવાનું છે કે નહીં તને? બહુ જમવાનું છે, કોક બહુ. પણ પીવાનું છે ને અને મોદક ખાવાનું. Anyways, guys, I'll see you in the next vlog. I hope you liked this anniversary vlog. We'll see you hopefully very, very soon. Okay, guys. Bye. Bye. Stay positive and stay happy. Good enough. Hey, my goodie, my goodie, my good enough. Hey,